Hello students, most welcome the Vice Rank YouTube channel. Here I discuss mathematics for IIT-JEE. So you can subscribe and learn with me. Today I took a problem of JEE Advanced 2013 and in this problem they asked for the number of solutions of the equation. Okay, so the given equation is this x square minus x sin x minus cos x equals to 0. So here we have to find the number of solutions. Okay, so let's start solving this problem. And this is a very good problem actually. So let's start solving. So what have to do here? हेयर सॉल्यूशंस नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए जिसमें फंक्शंस इंक्लूडेड हों, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस इंक्लूडेड हों, तो हम क्या करते हैं, कुछ एलएचएस पार्ट कर लेते हैं, कुछ आरएचएस पार्ट कर लेते हैं और उनको दो डिफरेंट फंक्शन मान के उनके हम कर्व्स ड्रॉ करते हैं, उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड देन वी टेक द इंटरसेक्शन पॉइंट. तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बेसिकली आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. ओके, तो हम देख लेंगे कितने इंटरसेक्शंस बन रहे हैं और उन इंटरसेक्शंस की जो काउंटिंग होगी दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, so what we have to do here, so we have to, let's write here in solution in detail. So we have to find number of solutions, not exactly solution, number of solution. So graphical method is very simple for doing such problems. So we have this equation that is your x square minus x of sin x, that is given, minus cos of x is just equal to 0. So you can write this equation in this way, that is x square is just equal to x sin x and plus of cos x. So you can see in the left side there is the x square only and the right side this is x sin x plus cos x. So I am just taking this right hand side is a different function and x square is a different function, then we plot the graph and take the intersection points. Okay, so now let this is fx is just equal to x square and this gx is another function, that is what, that is your x sin x एंड प्लस ऑफ कॉस एक्स. ओके, जो राइट साइड में था उसको हमने जी एक्स बोल दिया. अब क्या करना है, इन दोनों के हम ग्राफ प्लॉट करना है. तो यू क्लियरली सी कि जो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक पैराबोला है दैट इज ओपन्स इन द अप साइड एंड जिसका वर्टेक्स हमारे पास क्या है, दैट इज वर्टेक्स इज योर वर्टेक्स इज योर ओरिजिन. ओके, 0,0. सो यू कैन क्लियरली सी कि कैसे हमें सॉल्यूशंस निकालना है. तो यू कैन आल्सो राइट इन डिटेल, सो यू कैन एबल टू डू अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. ओके, तो देखते हैं इसको. क्लियरली यू कैन से क्लियरली द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, the number of solutions of the given equation is same as the intersection point. The number of points of intersection. So you just always remember of the curves. That is your y is equals to fx and y is equals to gx. Got it? Okay, so if you talk about the this curve, if you talk about the this curve y fx is equals to x square, so this is basically parabola. Okay, so you can just say the curve y is equals to fx is a parabola
parabola with vertex at 0 comma 0, and this y-axis as of symmetry axis of symmetry. Okay, so if you are draw some curve here, I'm just want to draw, suppose that हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, just taking, sorry, this is your x-axis, and this is your, just a second, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई. सो हमारा जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ लुक्स लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द ग्राफ. ओके, सो अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज योर जी एक्स. ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट जी एक्स, so gx is just equal to x sin x plus of cos x. Okay, so if you take derivative of it you can easily see derivative is x sin का हो जाएगा cos x. Okay, and that is equals to plus of sin x only, and a minus का cos x का sin x हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x, तो ये और एक कैंसिल, तो इट रिमेन्स ओनली x cos x. So this is your g dash x. Okay, now if you are checking that value of this derivative, first derivative पॉजिटिव साइन अगर हम इसकी चेक करें तो यू कैन क्लियरली हैव, आप इस तरीके से देख सकते हो. अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, इफ़ यू हैव, अच्छा यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, if you are going to draw, so this is obviously this is 0 comma 0, and we have some points. Suppose that here somewhere it is pi by 2, this is negative pi by 2 is somewhere, and then you have somewhere is pi, and it is some negative of pi, and so on, and in this way. Okay, so अगर हम इस g डैश जो सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जी एक्स का, उसकी अगर हम वैल्यूज देखते हैं, साइन देखते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी this 0, this is pi by 2, this is pi, and this is your 3 pi by 2, and this is somewhere is in so on. So this is negative of pi by 2, and this is your minus 3 pi by 2. अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो x भी पॉजिटिव है, cos की वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, तो इस वाले इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव. बट अगर हम पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के कोई वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास x तो पॉजिटिव है, बस cos की वैल्यू निगेटिव रहती है, तो ये जो जी डैश एक्स है वो निगेटिव हो जाएगा इसके अंदर. ओके, एंड इन दिस वे we will just gone through. And similarly, if you are take the value of x between 0 and minus pi by 2, the value of the g dash x will be negative, and in the similarly this expression will be positive, and so on. तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी वैल्यूज हमारे पास निगेटिव हो रही हैं और पॉजिटिव हो रही हैं, तो किस पॉइंट पे निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है और पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है. तो ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब सपोज दैट हमने लिया माइनस पाई बाई 2 पॉइंट, नहीं हमने 0 लिया, ठीक है. 0 से पहले हमारा फंक्शन क्या था, निगेटिव, और 0 के बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव. इसका मतलब वो 0 से और यू नो दैट कि अगर डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, अगर डेरिवेटिव निगेटिव है
तो डिक्रीजिंग होता है फंक्शन। इसका मतलब है डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास जीरो से पहले निगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा था, और जैसे जीरो से बाद हुआ पॉजिटिव हो गई डेरिवेटिव की वैल्यू, इसका मतलब जो फंक्शन जी एक्स है वो हमारा इंक्रीज होने लगा। तो कोई फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है उसके बाद वो इंक्रीज होने लगा, इसका मतलब है देयर समवेयर मिनिमम पॉइंट। ओके, समझ गए? तो इसी तरीके से अगर फंक्शन पॉजिटिव से, तो इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव तो देयर विल बी मिनिमा, अगर डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यू कैन से पॉजिटिव है, उसके बाद वो निगेटिव हो रही है, चेंज हो रही है, तो इट विल बी मैक्सिमा, सम पॉइंट मैक्सिमा इज देयर। इट मीन्स अगर हम बात करें पाई बाई टू पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसमें डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है। पॉजिटिव का मतलब वो इंक्रीज कर रहा फंक्शन, और निगेटिव का मतलब वो डिक्रीज करने लगा। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने के बाद वो डिक्रीज करने लगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, मैक्सिमा रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन हमारा बिहेवियर चेंज कर रहा है, इट मीन साइन चेंज कर रहा है, तो उससे हम ये आइडिया निकाल लेते हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा दे रहा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा दे रहा होगा। दैट इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। ओके, so we will have to check. So here we can clearly see at the point pi by 2 there will be, क्योंकि हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो देयर विल बी मैक्सिमा। एट द पॉइंट जीरो देयर विल बी मिनिमा, बिकॉज निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ये डेरिवेटिव जा रहा है निगेटिव से पॉजिटिव। ओके, और जब डेरिवेटिव निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब निगेटिव मीन्स वो डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव मीन्स वो इंक्रीज करने लगा, है ना। तो डिक्रीजिंग है, पहले ऐसे आ रहा है सपोज दैट डिक्रीजिंग है, फिर वो इंक्रीज करने लगा, तो इंक्रीज करने लगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, मिनिमा रहा होगा। तो ये हमारे पास कुछ आइडिया आ जाते हैं कि कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्लियर? इसका मतलब है कि पॉइंट्स हैं जो कि माइनस पाई बाई टू हो गया, जीरो हो गया, पाई बाई टू हो गया, पाई हो गया, ठीक है, थ्री पाई बाई टू हो गया, हियर समवेयर इज थ्री पाई बाई टू। तो ये पॉइंट है, थ्री पाई बाई टू क्या है, मिनिमा। ओके, सो इट विल बी समहाउ, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स जो बनेगा, ये जो हमारा फंक्शन था जी एक्स, दैट इज एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका जो ग्राफ हमारे बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। इट विल बी लुक्स लाइक दिस, दैट इज व्हाट। और अगर हम जीरो की बात करें, जीरो वाले पॉइंट पे, तो जीरो पॉइंट पे हमारे पास क्या मिनिमा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मिनिमा बनेगा। इसका मतलब है इसका ग्राफ आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, आप बनाइएगा अपने से कुछ, लाइक नॉट लाइक दिस सपोज दैट इट्स लाइक दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू this is somewhere here। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा। ओके, सो ये ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ दिस जी एक्स। ओके, दिस इज जी एक्स, इन मीन्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ग्राफ है, और ये तुम्हारे पास का था वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो नाउ वी वांट द नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। so you can clearly say there are two intersection points, one is this and one is this। तो इसका मतलब इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे हमें करना होता है, कैसे हमें ग्राफ की प्लॉटिंग करना होता है, कैसे ग्राफ को देखना होता है। लेट्स राइट द लैंग्वेज एज वेल, ठीक है। सो you can easily say, so this implies so clearly you can say this is y is equals to fx and y is equals to gx intersect at 2 points। तो इसका मतलब है दिस implies number of solutions
जस्ट इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास कैलकुलेट होंगे। ओके, तो आई होप सो कि समझ में आया होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स को। आई एम working with the concept and problems of the IIT-JEE mathematics. Thank you so much.